So, today we'll again talk remaining parts of testing of oilments. So, in previous class, I have given some introduction about these two types of testing methods are there. One is destructive, another is non-destructive testing method. Okay, so destructive means in a destructive test method, the oilments or the joining parts. In this case, the joining parts actually damaged by applying the mechanical force, and after applying mechanical force, either tensile, compression, or fatigue, or whatever, means in this case the material damage, and after damaging, we'll get the properties of the oilments. Okay, and another is non-destructive testing method. So in non-destructive testing method, in this case, material there is no need to deform the material, means damage the material. इसमें जो material component होगी, means the oiling part, uh, no need to deform or damage the welding part. So without deforming or damaging the welding part, you can test means, where there is any welding defects or not. Okay, means in this test, in the non-extractive testing method, you can just identify that if there are any defects or not. If any defects are present or not, like internal cracks or external cracks, porosity, blowholes. Okay, so misran, overlapping, so different type of oiling defects are there, and you can identify by non-destructive testing method, means if there are any defects are present or not. Okay, but by destructive testing method, you can get the mechanical properties like tensile strength, how much tensile strength after getting the welding. Means welding करने के बाद welding welded component में कितना strength मिल गया. Okay, और different mechanical properties like hardness, strength, fatigue properties, compressive properties, toughness. So, means depending on the test, you will get different mechanical properties. So, these are destructive testing methods. Okay, and these are different welding defects, means possible causes of welding defects. Due to these causes, different welding defects may form. Okay, so these possible defects like moist electrode, improper cleaning, presence of grease and dirt, okay, contaminated surface, improper gas yield, too high gas flow, okay, too high arc length, incorrect surface treatment, okay, like edge preparation, means is the edge preparation is not properly, means if there is any rust on the edge. Okay, or BTA orientation, operator skill also depend, and this also affect the effect on the welding defects, information of welding defects. If skill of operator is not means, not if the operator skill is if the operator is not properly skilled, then due to this skill may uh, some defects may form. Okay, so and so these are the possible causes, and due to these possible causes, different oiling defects like a lack of fusion, means इसमें fusion means completely fusion नहीं हुई, completely melt नहीं हुआ. Okay, lack of fusions means like this means in this here also actually this portion actually not completely poured by molten material. Okay,
So this type of lack of fusion, so this type of porosity, just here some pores are there. Okay, like just on the surface or internal in the oilment के अंदर भी रह सकता है and surface में भी हो सकता है. This is porosity. Okay, like inclusions, some inclusions may form in the oilments. Okay, means oilment के अंदर कुछ inclusion भी फॉर्म हो सकती है. ओके, ड्यू टू दिस पॉसिबल कॉजेस मीन्स जो डिफरेंट कॉज है, so due to these possible causes this type of welding defects may form. And the cracking, so this type of cracking is like at the on the surface. Okay, so this is outer crack or inner crack may also form means within the oilment, so like ऐसे crack भी हो सकती है अंदर में. ओके, तो ये जो ऑयलिंग जो हैज जोन है, this is actually has zone. Has means has heat affected zone. Okay, this is heat affected zone, has zone, or it is also called the oil mats. Okay, means oiling means joining of two parts. This is one part. This is another part. So after joining of two parts, we will get the product that is the oil mats. Okay. So, two type of testing method. One is the non-destructive method. So, and another is destructive testing method. So, in non-destructive testing method, means इसमें material does not damage, means without damaging the material or component of the system. Okay, so without damaging the material component or system, we you can identify that is there any defects. Defect means what defect? Defects due to uh, oiling, means there are oiling defects. Is there any oiling defects or not? Okay, and these non-destructive method testing methods are like a dye penetrant magnetic particle testing, eddy current testing, ultrasonic testing, radiographic testing. Okay, so these are different non-destructive methods. In destructive testing method, so these are in this case the material or component or the system whatever. So these actually damaged by applying the mechanical force. Okay, so after applying mechanical force, the component and material means जो joint कर रहा हूँ means element damaged by applying mechanical force. Okay, mechanical force like tensile force, fatigue loading, bending loading, means bending force, impact force. Okay, so if you apply cyclic force, then you will get uh, fatigue properties. Okay, and this destructive testing is known as fatigue testing. Okay, if you apply tensile loading, unidirectional loading, then you'll get the tensile properties, tensile mechanical properties. All these properties are actually mechanical properties, and we apply only tensile load, then you will get the tensile properties. So tensile properties means what are the tensile properties? Yield strength, okay, yield strength, UTS, okay, in elongation, how much elongation? So it is represent as a percentage EL elongation. Okay, uh, strain hardening exponent, strength coefficient. Okay, so all these properties you will get. Bending test. In bending test, you will also get the bending properties. Toughness test. From this toughness test, means, in this case, no, impact load apply, and this type of test like a RP test and IJOT test. Two type of toughness test is there. One is RP and another is IJOT test. Okay, and from this test, you get the toughness properties. Okay, impact properties. Okay. Hardness test, from this test you'll get the hardness hardness value.
Okay, like and different type of hardness tests are there. Brenial hardness test. So in case of Brenial hardness test, you will get BH10, Brenial hardness number. Vickers hardness test, you will get a BH10, means Vickers hardness number. Okay, and another is Brenial Vickers and Rockwell. So this is RC, Rockwell hardness test, Rockwell. And in the Rockwell hardness test, there is only three scale A, B, C. So RA, RP, RC. Okay. 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 So first is non-destructive testing method. So another non-destructive testing method is dye penetrant testing. Okay. So dye penetrant testing means in this testing first you have to clean the surface. Means suppose these are two. Okay. Suppose these are two parts and you have joined by welding process. Then you have to first clean the surface, top surface. You have to clean this top surface first by MRE paper, then cloth flow polishing. Okay. Then after cleaning, you have to apply some dye over here, on the surface. On the surface, you have to apply dye. So this color, like this red color, is the dye. Okay. Then you have to give some time to wipe out this dye. Means जो dye apply किया हूँ, this dye actually wipe out means if there is a crack, then this dye will get inside into this क्रैक एक क्रैक जो है क्रैक के अंदर ये डाई जो मैंने अप्लाई किया दिस डाई विल पुट इनटू दिस क्रैक क्रैक के अंदर आ जाएगा ओके देन यू हैव टू अप्लाई ए डेवलपर ओके so if you apply developer on the surface again देन जहाँ क्रैक है उसी को जो ड्राई मैंने अप्लाई किया था उसी कलर की यहाँ एक मार्क आ जाएगी ओके so then you can identify that if there is a any crack or not okay so see the sequence means first you have to clean then you have to apply a dye so this dye is nothing but a penetrant. Okay, dye and penetrant is same. Then, on this penetrant will wipe out means ये जो क्रैक है क्रैक का अंदर आ जाएगा इसमें जो मैंने पेनेट्रेंट यूज किया हूँ ओके तो after after some time से you have to clean the surface again जो surface में मैंने dye पेनेट्रेंट मैंने यूज किया था वो फिर क्लीन करनी है एंड यू हैव टू अप्लाई ए डेवलपर ओके ये डेवलपर तो जैसे मैं डेवलपर यूज करूँगा देन जिस कलर की मैंने पेनेट्रेंट यूज किया था उसी कलर की मार्क आएगी ओके जैसे इस कलर की मार्क आएगी तो इफ देयर इज एनी मार्क ऑन द सरफेस अगर इसी टाइप की कोई मार्क आएगी देन यू कैन से दैट देयर इज ए क्रैक क्रैक है okay so this is dye penetrant testing non-destructive testing okay so used for detecting the presence of surface defects only means, अगर surface crack रहे और surface porosity the surface blow holes surface holes सरफेस में अगर सरफेस डिफेक्ट सही रहे सपोज सरफेस एक्सटर्नल क्रैक पोरोसिटी ओके और जो मिश्रण
Okay, undercut. Okay, so this type of defects you can identify by this dye penetrant testing. Okay, अगर surface अगर suppose if there is a crack, internal crack here, so this crack cannot be identified by this type of method because this developer or penetrant does not follow to this क्रैक ये क्रैक तक नहीं आएगी क्योंकि ये क्रैक सरफेस से स्टार्ट नहीं हुआ. ओके, तो इंटरनल क्रैक, इंटरनल voids, internal blowholes, so these type of defects cannot be uh, identified by this dye penetrant testing. Only surface defects can be identified by this dye penetrant testing. Okay, another is magnetic particle testing. So magnetic particle testing means means तो इफ यू क्रिएट, अगर ऐसे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड मैं क्रिएट करूँगा मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस एक्चुअली दिस टेस्टिंग प्रोसीड्योर इज बेस्ड ऑन द flow of magnetic lines of forces. Okay, so this basic principle is to follow the magnetic lines of forces. Okay, and अगर means if there is a no any no any cracks or porosity or any defect, then this magnetic lines will follow in a straight line. अगर कोई means pores or क्रैक और कोई मीन्स इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टर अगर कोई नहीं रहेगी, देन मैग्नेटिक जो फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल फॉलो इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, मैग्नेटिक फोर्स फॉलो इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर इफ देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्टर. Okay, obstructor means who is the obstructor? Obstructor, air obstructor is either any internal crack or porosity or voids. Okay, so suppose if there is any there is a crack, then what happens? ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ये फोर्स क्या होगी? डिस्टॉर्ट होगी. दिस मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स along this straight line this force will not follow. ओके, तो यह ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसे डिस्टॉर्ट होगी. ओके, एंड दिस विल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द क्रैक, मीन्स क्रैक और पोरोसिटी और ब्लो होल्स, वॉट एवर मीन्स डिसकंटिन्यूटी इन द विदिन दिस मटेरियल. और कोई भी डिसकंटिन्यूटी रहे, मीन्स ऑब्स्ट्रक्टर है, देन ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, तो ये जो फोर्स लाइन क्या होगी? डिस्टॉर्ट होगी. ओके, एंड दिस डिस्टॉर्शन मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दिस क्रैक. ओके, तो ऐसे डिस्टॉर्ट हो रही है. ओके, जस्ट सी ऐसे डिस्टॉर्ट हो रही है. ओके, नाउ अगर मैं या मैं फेरोमैग्नेटिक कुछ पार्टिकल्स में या स्प्रेड करूँगा. ओके, सो दिस इफ यू spread some ferromagnetic particles, then what will happen? These lines are magnetic force line. तो जो ferromagnetic particles है, these ferromagnetic particles actually will this magnetic force line will this magnetic force will attract these ferromagnetic particles. तो फेरोमैग्नेटिक में पार्टिकल अप्लाई स्प्रेड करूंगा, तो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल क्या करेंगे? मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल अट्रैक्ट दिस फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स. ओके, एंड जैसे अट्रैक्ट करेगी मीन्स मैंने थ्रू आउट दिस सरफेस आई स्प्रेड द ferromagnetic particle throughout this surface. Okay, okay, throughout the surface of this what I will spread the
फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल। ओके, तो जहाँ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है उसी पर मैग्नेटिक पार्टिकल को अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, एंड सारे पार्टिकल उसी पर आकर अट्रैक्ट होगी। ओके, क्योंकि इसमें तो इसमें देखो, अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली ऑयल बिलो फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से नीचे है। ओके, तो यहाँ जो मैग्नेटिक पार्टिकल रहेगी वो सारे मैग्नेटिक पार्टिकल कहाँ होगी, जहाँ ज़्यादा फोर्स है, ये सरफेस से ऊपर आ रही, मीन्स इसी एरिया में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल अट्रैक्ट दिस फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल। तो जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल में स्प्रेड कर रहा हूँ, तो दिस फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एंड यह सारे फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ पर क्या होगी, हाँ, जमा होगी। ओके, so then if you see this with the help of a ultraviolet ray, then जो सारे फेरोमैग्नेटिक यहाँ पार्टिकल गैदरिंग हुआ, यहाँ एक ऐसे उनसे दूसरी कलर मिलेगी। Okay, so like that means if you see this system in a ultraviolet ray, then you will get a color over here. Okay, so by this way you can identify that there is a any discontinuity, means there is any defect in the interaction. Okay, clear? So by this method you can identify presence of any crack, porosity, near surface defects. Okay, magnetic particles tend to migrate towards the location and pattern of magnetic particles. Magnetic particles suggest the location, size, and type of discontinuity. Okay, means कितना magnetic particle start करिए, so this depends on the size of the defect. Okay, अगर defect साइज ज़्यादा होगी, then ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल क्या होगी, कलेक्ट करेगी। ओके, ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल विल attract there। ओके, एंड लोकेशन ऑफ द क्रैक, कहाँ क्रैक है वो भी लोकेट कर पाऊंगा, क्योंकि जहाँ क्रैक है उसी पर फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल, सारे फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल विल अट्रैक्ट देयर। ओके, एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मीन्स किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्रैक जो है किस टाइप की है। ओके, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई। क्लियर? हेलो, 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 आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, जी सर आ रहा है। Okay. Now another is eddy current testing. So eddy current testing means uh, अगर मैं करंट फ्लो करूँगा, मीन्स along this coil, so this is actually coil, so if I follow a current, then what will happen, a means eddy current will generate। Okay, so alternating current running through a coil create magnetic field। Okay, first magnetic field create होगी in and around the coil, means in this coil, within this coil,
and around this coil a magnetic field will get. Okay, if you pass a current over through this coil, if you pass a current through this coil, then a magnetic field in this coil and surrounding this coil will generate. Okay, this magnetic field fields from loops around the wire and join to form larger loops. इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लूप अगर अगर इफ दिस कॉइल इज इन स्ट्रेट, सपोज इसे स्ट्रेट है, तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी सराउंडिंग दिस दिस वायर. ओके, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, okay, surrounding this wire. But if this wire is in a loop like this, means is as a coil, then this one magnetic field in surrounding this coil and in this coil will generate. Okay, means एक magnetic field generate होगी due to this coiling and surrounding this coil in the coil also generate, and these two magnetic fields will add together and it means magnitude of a magnetic field will increase. Okay, so these two loops joined and this form a larger loop. Okay, if the current increase in the loops, the magnetic field will expand across some or small of the loops of wire that are in close proximity. Okay, this includes a voltage in the neutral loops and cause electron flow or eddy current in electric conductive material. Okay, तो ये जो means एक resultant मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट विल जनरेट here. Okay, and this eddy current actually pass through the metal, but uh, this includes voltage and the neighboring loops and cause electron flow or eddy current in electrically conductive materials only. Means जो material are only electric conductive. But अगर there is any defect, means if any defects in the material, including changes in the wall thickness or cracks or pitting or any other discontinuities, then change the flow of eddy current and are measures on eddy current instrument. Means अगर अगर इसमें कोई discontinuity रहे, means in this material, suppose जो सपोज वेल्डिंग डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट मीन्स कोई क्रैक और ब्लो होल्स और porosity or whatever this means, these are actually discontinuity, means material टोटली ये नहीं है, प्योर नहीं है. ओके, मीन्स हम डिसकंटिन्यूटी है, देन ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी एडी करंट जो फ्लो होगी, तो एडी करंट वहाँ स्टार्ट होगी, मीन्स जितना एडी करंट मिलना था उतना एडी करंट नहीं मिलेगा. ओके, so these from these changes of eddy current, following eddy current, you can uh, uh, you can identify that is there, so there is any defects or not. Okay, and eddy current जो eddy current flow हो रही है उसका measurement instrument रहेगी, and by measuring this instrument you can identify that is there any change in eddy current or not. If there is any change, then there is any crack, there may be any crack or discontinuity. So like that, see, this is the coil. Okay, so this is the coil. So um, this is a voltage source, and if you pass a current, then this is the current meter from where you can measure the current. Now, and this coil will pass through this metal, जो cylinder है, through this cylinder. Then this see here a eddy current will
create air eddy current will create, and due to this eddy current actually just see this current value increases first. This current flow when it is in no pen, and when it is in the means, this a rod, you are passing through a rod, then this current changes. Okay, now this current is this much. Okay, now current again. Okay, the current mirror. So this is due to the means eddy current. This make eddy current create हो रही है. Okay, and so एक magnetic field create हो रही है due to coiling, and means in the coil and surrounding the coil magnetic field होगी, and eddy current generate होगी, and this eddy current actually add. Okay, now जैसे ही मैं this when this coil is passing through this crack, then जो eddy current create हुई है, तो this eddy current actually more eddy current will create. Okay, then this eddy current then there is a change in current ammeter. In ammeter you will get a change in current. Okay, so इसमें change आ रही है. So if there is any change in this means current meter, then you can say that there is any either discontinuity or crack. So, there. Ultrasonic testing. So I think all of you know the ultrasonic testing. Means, this word I think all of you are familiar. Ultrasonic. Anyone can tell me, explain what is this ultrasonic testing? Hello, Yes, Samir. sir. Samir, Yes, sir. can you explain what is ultrasonic testing? The basic principle of ultrasonic testing. Hello. Yes, sir. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है, कोई कह सकते हो निशान? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में सुना है कि नहीं? जी सर, सुना है। सर वो तो ऐसा अल्ट्रासोनिक होता है कि पता है सर, वो किसी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई क्रैक या कोई इंक्लूजन होता है, तो अल्ट्रासोनिक वो वेव्स उस पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कहाँ पे वो है। ओके, तो मीन्स इसका प्रिंसिपल क्या है? मीन्स कैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग काम करते हैं कैसे? जहाँ पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी होते हैं, वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं। हाँ, मीन्स एक अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन वेव, एक वेव अल्ट्रासाउंड की एक वेव पास किया जाता है, वाइब्रेशन और साउंड अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन की वेव पास किया जाता है थ्रू थ्रू दैट प्रोजेक्ट, जिसको अल्ट्रासाउंड टेस्ट करूंगा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करूंगा, उससे एक अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन वेव की पास किया जाता है. ओके, and if there is any discontinuity means discontinuity means change, अगर उसमें कोई चेंज है मीन्स चेंज मीन्स सपोज मेटल के बाद कोई डिसकंटिन्यूटी है मीन्स क्रैक है और कुछ है मीन्स मेटल देन एयर.
ओके, मेटल के बाद और कुछ मेटल, एक इन्वायरमेंट है, उसके बाद और एक इन्वायरमेंट है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट इज देयर। ओके, तो अगर मीन्स ऐसे कोई चेंज रहे, देन क्या होगी, देन जो वेव मैंने पास कर रहा था वो वेव वहां से वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी वहां से। ओके, इफ देयर इज ए चेंज ऑफ मीडियम, change of medium actually. Okay, so if you passing the wave, passing the wave, ultrasound wave through metal, and if there is a change of medium, means metal to air, or air to metal, okay, or metal to any discontinuities, okay, then what will happen, this wave will come back from that. Okay, that where the medium is changed. Okay, so like that means you are suppose passing this wavelength, ultrasound wavelength. So if there is a change, means this is metal, suppose this is metal, and at the bottom of the metal, obviously there is a change, means at the bottom from metal to air, bottom में क्या है, इसमें air है। Okay, so this is the change of medium. Okay, so this ultrasound, what will happen from here? This ultrasound, wave of ultrasound will come back. Okay, so this this wave of ultrasound enters into the metal, then the intensity is high. This is actually initial. Means so high. Uh, means at the beginning, means जहाँ वह इंसर्ट हो रही है, वह इंटेंसिटी ज़्यादा है। एंड जैसे दिस वेव ऑफ अल्ट्रासाउंड इज पासिंग थ्रू दिस मेटल, देन इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग लाइक दैट, जैसे डिक्रीज हो रही है। ओके, एंड जैसे मीन्स मीन्स मीडिया चेंज होगी, मीन्स मेटल टू एयर, देन क्या होगी वो, मीन्स फिर वेब जो वेवलेंथ मैंने पास करा था, दिस वेवलेंथ विल कम बैक, ऐसे वापस आ रही है। तो वापस आ रही है मीन्स दिस वेवलेंथ, तो ट्रांसड्यूसर, इसमें ट्रांसड्यूसर रहती है, तो फ्रॉम दिस ट्रांसड्यूसर विल सेंस दिस वेवलेंथ, एंड इसमें मॉनिटर है, उसमें एक पीक मिलेगी, मीन्स वो वेवलेंथ फिर वापस है। ओके, so this is discontinued to means due to the bottom of the surface. अगर इंटरनल क्रैक रहे इसमें, तो क्या होगी, इंटरनल क्रैक, ड्यू टू दिस इंटरनल क्रैक क्या होगी, यहाँ से जो वेव वेव मैंने पास करा था, दिस वेव विल कम बैक फ्रॉम दिस इंटरनल वेव्स, फ्रॉम दिस इंटरनल क्रैक, मीन्स यहाँ मीडियम चेंज हो रही है, मेटल टू एयर आ रही है, क्रैक मीन्स विद इन दिस क्रैक क्या है, एयर है ना, क्रैक के अंदर एयर रहती है। तो यह मीडियम चेंज हो रही है, मीन्स मेटल टू एयर आ रही है। तो जैसे मेटल टू एयर आ रही है, वो वेवलेंथ क्या होगी, वापस आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो रिफ्लेक्ट होगी मीन्स फिर, और पीक के जो वेवलेंथ है और या ट्रांसड्यूसर वो सेंस करेगी, एंड और एक पीक मिलेगा। ओके, so अगर if you get this type of peak, different peak, suppose और एक peak मिला है, तो you can say that two cracks are there, and कहाँ crack है, और this means from this scale you can identify जो यहाँ crack है। Okay, clear? So just see, this is the basic principle. So just see, this is the wave form. So means transmitter, receive. So this is a transmitter or receiver. So suppose this, just see, this waveform is means transmitting from here, and when it comes at means and this there is change in media, means from this metal to air,
then this waveform will come back from here. यहाँ से वापस आ रही है, and this transmitter or receiver will receive the signal. Okay, so now if you travel this transmitter, okay, यहाँ ट्रैवल किया हो तो यहाँ से फिर वेवलेंथ इसे पास कर ट्रांसमिट करेगी, एंड ड्यू टू दिस कैविटी सम वेवलेंथ विल पास, यहाँ से पास हो जाएगी। ओके, एंड कुछ वेवलेंथ क्या होगी, जस्ट ड्यू टू दिस चेंज इन मीडिया, मेटल टू एयर, एयर है, तो फ्रॉम दिस चेंज इन मीडिया, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर ये ट्रांसमीटर जो है यहाँ आकर वो सेंस करेगी। तो इफ मीन्स मीन्स व्हेन देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, मीन्स जो वेवलेंथ मैंने ये किया फिर वेवलेंथ आ रही है, तो इसमें टाइम की ड्यूरेशन ज़्यादा है। ओके, और अगर इसमें डिसकंटिन्यूटी है तो उससे पहले जो ट्रांसमिट होकर आ रही है उसका मीन्स वेवलेंथ मिल जाएगी, मीन्स जो वापस करिए उसका सिग्नल मिलेगी। ओके, so by this way we will get a peak here. Okay, it is peak mileage. Okay, so from this you can identify that there is a any crack. So just see, means suppose you are passing this wavelength. Okay, so when this wavelength is passing through this, means there is a no discontinuity, then you will get this peak, means this one. So this one due to means due to change of media at the bottom. Okay, now if you travel this transducer here, and there is a discontinuity, then you will get here another peak, means first you got here a peak, but before get a peak here। ओके, उससे पहले एक यहाँ पीक मिल गया। ओके, एंड अगर मैंने और इसको ट्रेवल करूँगा ट्रांसड्यूसर जो है, उससे पहले और एक पीक मिल जाए। ओके, ओके, सो these are actually due to discontinuities or defects। another is radiographic testing। तो radiographic testing से इसमें so this penetrating radiation is passed through a solid object onto a photographic film, resulting in an image of the object internal structure being deposited on the film। Means एक radiation is passed, so this radiation is means two terminal there on the cathode and anode, so this is the radiation, so this radiation pass the source of the radiation, so this radiation pass through this welding zone, ये वेल्डिंग जोन से दिस रेडिएशन, इसे रेडिएशन पास किया जाता है, एंड इसमें एक फिल्म रहती है। ओके, सो दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म। ओके, सो so the amount of energy absorbed by the object depends on its thickness and density। ओके, इनसे जो रेडिएशन में पास कर रहा हूँ, इसका जो एनर्जी है, तो दिस एनर्जी एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। ओके, मटेरियल कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इनसे जो रेडिएशन में पास कर रहा हूँ,
इसका जो एनर्जी है, इस some energy absorbed by the metal, and this absorbing amount of energy absorbed is depends on the thickness and density. Okay, energy not absorbed by the object will cause exposure of the radiographic film. इनसे अगर एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देन दिस एनर्जी जो फोटोग्राफी फिल्म है, फोटोग्राफी ऑन द फोटोग्राफी फिल्म, वो एनर्जी वह ट्राई करेगी एंड एक मार्क होगी. Okay, so this energy of the radiation will insert into the onto the photographic film, and a mark will be created on the photographic film due to the amount of energy. Okay, so अगर means if there is a no discontinuity, means जितना एनर्जी पास होती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जितना पास होती है, some energy will absorb by the metal, and जो फोटोग्राफ फिल्म में जो फोटोग्राफ फिल्म है में जो एनर्जी स्टार्ट होती, तो इसमें एक्चुअली कंटिन्यूअस फिल्म मिलेगी. ओके, मीन्स देयर विल नो एनी मार्क इफ देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूटी. ओके, एंड अगर इफ देयर इज एनी डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी मीन्स इसमें क्या हुआ, जो डेंसिटी है, डेंसिटी घट गया. तो डेंसिटी घट गया मीन्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी. तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी मीन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन, रेडिएशन से ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी अगर यहाँ पर मीन्स इसी फील्ड, फोटोग्राफ फील्ड पर आकर वो इंसर्ट होगी. ओके, so due to this extra energy means due to discontinuity, discontinuity means डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मीन्स ज़्यादा एनर्जी पास हो रही है थ्रू दिस मेटल, ज़्यादा पास हो रही है मीन्स यहाँ जो फोटोग्राफी फिल्म है इसमें एक मार्क आएगी. ओके, तो फोटोग्राफ फिल्म से पता चलेगा तो कहाँ डिसकंटिन्यूटी है और क्रैक है और पोरोसिटी और ग्लो होल्स है. Okay, so porosity cracks, internal cracks will appear as dark outlines of in the film. जो फिल्म है, फोटोग्राफी फिल्म है, उसमें डार्क आउटलाइन जैसे ब्लैक कलर की एक स्पॉट है. ओके, जिस टाइप की अगर क्रैक है तो क्रैक टाइप की मार्क आएगी, अगर ब्लो होल्स है तो बॉल सर्कुलर टाइप की मार्क आएगी. ओके, so inclusions of a low density such as slag will appear as dark area on the field, while inclusions of a high density uh, such as tungsten will appear as light area. Means जो inclusions रहेगी, inclusions का जो density है, this according to the density, the darkness, the light or dark area जो मिल रहा है, उसको डिपेंड करे, डिपेंड ऑन द density of the insulation. Okay. So these are actually non-destructive techniques. I define non-destructive techniques. Now, from the next class, we will detail study about the destructive testing. So after welding, we'll get this type of microstructure. I'm giving some introduction. Actually, जो oilment है, in oilment, the variation of microstructure along the oilments looks like that. Suppose
a welding zone है ना. So this is suppose welding zone or hatch zone. Welding zone means a hatch zone. So in within this welding zone, the change of the microstructure, and near the welding zone, the change of the microstructure is actually the microstructure is actually changed. Okay, so this is actually due to the heat, high heat generation of high heat and the cooling rate. Okay, so depending on the cooling rate and uh, generation of high heat, this microstructure at that zone. Okay, at that zone the microstructure will change. And so means different layer of microstructure will form. So see here. So here you can really understand. So this is the hedge zone. This is mainly your group. Means you want to join within this group, but within this group. Okay. So within this group, the microstructure will change. So if you consider in this zone, then the microstructure first this laminar type of means coarse grain structure at the means, um, surface beginning this type of microstructure laminated in elongated type of microstructure will form, and then at the center actually this microstructure will so, finer type of microstructure form at the center. Okay, रोलिंग का जो सेंटर है मीन्स इसमें एक जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगी. तो दिस इज एक्चुअली फाइनर टाइप ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस रोलिंग मीन्स जहाँ से इसी जोन पर जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगी. तो दिस इज इलोंगेटेड टाइप और लेमिनार टाइप. ओके, and if you consider along this base metal है, so along this base metal also microstructure change. First coarse grain structure, coarse type की means जो grain structure मिलेगी these are coarse means the grain size, grain diameter is more. Okay, and apart from here उनसे जैसे distance ज़्यादा होगी मीन्स along this base metal, so this the size of the microstructure grain size actually decreases means finer grain size will form here. Okay, मीन्स यहाँ से जितना डिस्टेंस आऊँगा तो फाइन ग्रेन साइज मिलेगी. ओके, so just see means at that zone means at the so this is actually your hatch zone, the profile. So in this zone you will get a coarse or laminated type of microstructure, coarse or laminated type. Okay, so this type of coarse type of microstructure means इसमें जो microstructure मिलेगी उसका साइज ग्रेन डायमीटर जो है ग्रेन डायमीटर बड़ा होगी. Okay, जो ग्रेन डायमीटर है दिस ग्रेन डायमीटर आर मीन्स बड़ा बड़ा ग्रेन मिलेंगे. ओके, एंड इसमें जो तो सेंटर है इन सेंटर पोजिशन में जो स्ट्रक्चर मिलेगी तो दिस इज एक्चुअली फाइन टाइप ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम हेयर जो ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी तो दिस इज एक्चुअली फाइनर टाइप मीन्स यहाँ से जितना मैं बेस मेथड तक जाऊँगा वो फाइन स्ट्रक्चर मिलेगी. एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट इन माइक्रो स्ट्रक्चर अगर मैं हार्डनेस लूँगा along this zone तो different hardness maintain. Okay, so this part I will explain in next slide.
Okay, thank you.